I'm going to start the website development. For designing the website, we require the another language that is called the markup language. So first of all, we start with the HTML. HTML stands for hypertext markup language. So first you need to understand what is that markup language. Markup language and programming language, there is a difference. Programming, by using a programming language, we give functionality to the program. माने हमें प्रोग्राम रे को किसी फंक्शनालिटी दवा पाई सपोज मु 10 and 20 को ऐड करिवे हमें ताको गोटे वेरिएबल रे स्टोर करछे ताको ऐड करी कि हमें इन्फॉर्मेशन गुडा को डाटा गुडा को शो करूछे तो सेते पय हमें यूज करिवा कोन मार्कअप लैंग्वेज. So HTML is a markup language that enable you to create a attractive and interactive website. A markup language provide a way to describe the structure of the web page. Okay, so web page design pine, so we require this markup language. Programming language giving a functionality. Markup language is used to presenting your information. In the world today, what are the website or web pages we have designed that is designed through the HTML. हमें HTML through रे ही design करूँगे. If I become a Java developer, if I become a .NET developer, if I want to become a Python developer, so any website development पाई HTML का हमको दरकार. तो जहाँ भी हमें वेबसाइट बनेवा HTML थ्रू रे ही हमको बनेवा को पड़ेगा. And it is very simple than the programming language, and you have lot of interest to do this. Why? Because now you are become a web designer. You are become a dynamic drawing designer. हमें को ड्राइंग करिया को बहुत भल लगे. तो एठी हमें निजे ड्राइंग करिवा, but in a different way. You have to create your own web pages. Today when you talking about any company, first we asking that company contain the website or not, and in the website the proper information is present or not. गोटे छोट दुकान ठार आरंभ करिके बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन माने से माने आइडेंटिफाइड होचंदी बाय यूजिंग ऑफ वेबसाइट. It is a trustable organization or not, so everybody is go through the website. प्रथम हमें वेबसाइट चेक करिए. Okay, so when I connected हमें गोटे कॉलेज विषय जानिबार अछि for higher studies, if it is present in the abroad or in the different state, you got this information from the website. And in the website there is having a lot of benefit. You reach to each person in the world. Different corner रे हमें बहुत लोगों सहित हमें लिंकअप हो पारे, like WhatsApp, Facebook. So these are the media
which is helping you to connect the people. आमे जेतले फेसबुक रे किछ फोटो अपलोड करछे, it is visible to the person those are present in your friend list. मुझे different corner in the world रे मु कनेक्टेड करिया को चाहूची लोक मानक सहित मु फेसबुक पेज बनू. Suppose I have some kind of hobby for teaching, you have hobby for cooking, so how you interact? You interact with them by creating YouTube channel. You have to interact with them by Facebook pages, Instagram pages. You have like followers, viewers, like, sharing, through which you can connect to the people. तो आमे फेसबुक रे only 3000 फ्रेंड को सहित कनेक्टेड हे परिबा. But if you create a Facebook page, you can connect the billions of people. जेते लोक दुनिया रचना में तांग सहित कनेक्टेड हे परिबा. Then in today's scenario, HTML is nothing but it is what website is a identification of any company. You can say any person also. If you have some kind of specialization, suppose you are the specialized on in beautician, so you highlight yourself, you create your page, Facebook page, you create your website, and say website को हमको ranking भी देगा पड़ता है. So how you have to give a ranking? जमते कि हमें उड़े मोबाइल फोन मार देले, ऑनलाइन शॉपिंग मार देले, फ्लिपकार्ट आगु गस जाए, तापर को अमेज़न आसे जाए. Because lot of people is searching for that website. तो आमो वेबसाइट को जे जेते सर्च करिवो, हमर रैंकिंग ता सेते बड़ी 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 जेते फेमस है जो नंबर 1 पेजेस रे आसी. To give a rank to the web page, हमको किसी keywords यूज करिया पड़े. Keywords माने हमें जहाँ भी सर्च करियो, suppose I want to know about some kind of programming language or HTML designing, so I have to search for it. HTML designing, design of website, so it gives the various of suggestion. गोटे पेज रे बहुत प्रकार सजेशन हमको दिए. और जो पेजेस को लोक माने बेसी विजिट करते फास्ट पेज रे से इन्फॉर्मेशन ता आस्ते. तो हमें कीवर्ड ता सेमते लिखि थिबा जे सर्च करिवो हमर वेबसाइट ता देखियो. मतलब दहीवरा पे गोटे वेबसाइट बनेबा, गोटे जरा गुपचुप पे हमें वेबसाइट बने, ऑनलाइन गुपचुप ऑर्डर तेरा कहीं नथि ओडिसा रे. जेतला मार दबो पानीपुरी गुपचुप इन ओडिसा, तो हम वेबसाइट जदि फर्स्ट थिबो ऑटोमेटिक सर्चिंग क्राइटेरिया हमको फर्स्ट देखेबो. Okay, so it is the new era of marketing, new era of transaction, or new era of business. In the traditional way, if you want to go for a website designing, माने business मते करिवार अछि, so I reach to the customer location, insert paper insert दबाकू पड़ुची, paper रे हमको दबाकू पड़ुची. But now what happened? We go for this business related activity through the internet. This internet is coming to the market in the year of 1993. Okay, so 1993 it is coming to the market. In that time, to chat with the people, we have the interest. माने chatting system जो आसेला 2002
2002 1 and 2 रे आस्तला Yahoo Messenger. So we have the what like interest to chat to the people. Yahoo Messenger रे different country लोगों से chat करिवा और chatting पे हमें 40 rupees देगी से समय 1 hour को 40 rupees था. For what? ना for chatting, for giving a smiley कि नहीं आप भी पैसा लगुता टंकाटा 2 टଙ୍କା लगुता account रे add होता. Have you imagine that kind of thing? But now what happened? Internet is now become part of our life. It is used in anywhere. You can say like आमे पाठ पढ़िबा पई जेमते कि हमको निहाती एबीसीडी जानिबा दरकार अ ए सब जानिबा दरकार. For the website designing and in present scenario, if you want to become a technology oriented, you must have know the knowledge of HTML. हमको HTML और knowledge आनिबा को ही पड़िबो. You are working in different field. मु जो field रे job करे जोटी भी काम करे, whether it is medical, whether it is completely software engineering, whether it is a architecture, so we have to go for it. Languages is different, like programming language, another is markup language. So HTML is a completely markup language, which stands for hypertext markup language. What is hypertext? Hypertext means it is connecting, the text is connecting to the different page. आमे जेतबेले सर्च करिवा कोनसी जिंस देखो गूगल रे काहे क्या को हाइपरटेक्स्ट को आ जाए म्हणजे गूगल मान ले तो आई सर्च फॉर लाइक मोबाइल फोन देखो एटी जो टेक्स्ट गुडा का आसिला these are called as the hypertext, means it is linking to the other pages. Okay, आमो मोबाइल फोन मारची माने देखो फर्स्ट मोर फर्स्ट को साइट टा पॉपुलर असला Amazon, and depending upon Amazon तापर Flipkart आसिला, and depending on my location एटी कि जे सजेस्ट कला कोटी कोटी मोर मोबाइल फोन अछि nearest to my place where I present. Then again it moves to the different website. Okay, Reliance Digital. Okay, because people are searching for the mobile phone for this site only. So here it is called the hypertext because it is linking to the other pages. And why it is markup? When you write a note, हमें तला note लिखु चाहे हमें तो किसी underline करू चाहे तो we are marking it because it is important. So here also it is marked underline, means here it contains some other pages. So markup, hypertext, markup, then language, and it is basically it is used to represent your information. आम पाखरे जेते information थिले, it is not like what if I have knowledge and if I am not expressing it, that means what? If you not express it, then nobody know about your quality, about your knowledge. जेमते कि आमे गोटे ड्रेस दुकान को गले से ड्रेस दुकान आगे जदि किसी डिस्प्ले न ही थिबो त लोक माने एते इंटरेस्ट नियंतिनी से ड्रेस टा आनिबा पे से जगह को जीवा पे ड्रेस दुकान नामी थिबो भलो क्वालिटी थिबो किंतु जोडी देखिबो हमर ड्रेस टा बेसी टंगा हिताय चकचक करथाय से हमें से जगह को जेता. That is what representing, तारा representation टा सेंते रहे. हमें तलो वेबसाइट बनेबा for any purposes, if you represent your information properly, then people are interested
to buy something from your web pages. A similar way, HTML is called as a markup language, which enable you to create attractive and interactive website. Markup language provide a way to describe the structure of the web page. In daily basis, in your home, you got a newspaper. घर को newspaper आसे, newspaper देखिए वो layout था ऊपर. This one. Okay. So this one is your web page. तर आर देखो heading गोटे structure रहेला. Sample text ये एठी गोटे container रहेला. एठी गोटे container रहेला. Heading गुड़ा का टिके बड़ा रहेला. Subheading टाटो छोटा रहेला. Means if your paper is not present in this way, or it is not highlighting a news in a bigger manner, so nobody will choice for it. And suppose India is got or win the World Cup, so it is highlighted. Okay. When the coronavirus is coming, it is highlighted. First cases in India. Okay, so highlight है कि daily basis रे हमारा paper रो first heading और first page रे खाली corona चल रहा. Okay, so that means every day the content has changes. A markup language, it provide a way to describe the structure of the web page, specifying how the text or graphics are displayed. हमें जो जिनसे represent करिवा को चाहूँ चे, सेटा को हमें केमती represent करिवा. It enable you to present the text into readable format. हमें जो text टा लिखिवा, ताको readable format रे show करी. Okay, so निजर copy बाहर करो. किसी जिनसे note भी करिया पड़ियो. First reading the HTML. What is HTML? It is a markup language that enable to create attractive and interactive websites. It provides a way to describe the structure of the web page, specifying how the text or graphics are displayed graphics are displayed on the web page. Okay, so एटा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहिबो. मु जो दिन जहा प्रैक्टिकल करिवि एटा करिकि समस्त करिवो. आ एट द एंड ऑफ द व्हाट सेशन माने कोर्स रे जेंदी समस्त निज निजर गोटे वेब पेजेस साइट बनै हितो माने निज निजर पेजेस बनेबो आ ताको केमती होस्टिंग करा हबो माने निज निजर बनेबो निज नारे बनेबो www.suppose disa.com is.com
तो निजर प्रोफाइल रे तुम बनइबो मान निजर इनफॉरमेशन तुम पड़ो आमे आगरो सीवी बनौथले तो जते बेले हमको जॉब पे अप्लाई करवा से कहबारे तुमरो सीवी दियो तो हमर मोर सीवी नै यू हैव टू कनेक्ट विथ मी विथ www.ankita.com तो जे से सेडू जानि देबो जे से आउ तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिबो से जानि दे द पर्सन इज नोइंग ऑल द थिंग आ जदि वेबसाइट मार देला आ इनफॉरमेशन से पाई गला देन दैट इज एनफ ओके माने से जानि परियो जे तुमरो नॉलेज केते अछि okay so do it is very interesting part website designing okay so before that you have to know what is the web pages हमें normal page देखी छे paper page okay then web page is what web page and paper page is different in a web pages you can represent your information throughout the world paper टा हमर पर्टिकुलर लोकेशन रे रही होची किंतु टोटल सब जगह रे मते इन्फॉर्मेशन टा शो करबा को हेले मो वेबसाइट रा हेल्प नेबी okay now this web page is of two type पेज होची दी प्रकार गोटे होची हमर नॉर्मल पेजेस आउट हैला वेब पेज जोरा में इंटरनेट रे हम एक्सेस करछे द पेजेस दैट वी आर एक्सेसिंग इन द इंटरनेट and these web pages is of two type one is static web page another is dynamic web page static web page mean तो आज वेबसाइट ओपन कली आज फ्रंट पेज ता जहा अछि काली भी ओपन करबी शेयर होइबो डायनामिक वेब पेजेस मींस इट इज इंटरैक्टिंग विथ द यूजर माने तुमको से तुम्हारा आईडी और पासवर्ड मांगिबो तो बेस्ड अपन योर आईडी एंड पासवर्ड देन दैट पेज इज ओपन माने से पर्टिकुलर पेज ता ओपन हो okay static means it is always constant dynamic means it is interacting with the user then first you give some heading what is web page web page is a document it is written in web page is a document it is written in HTML and viewed Sir, written in HTML and viewed 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 माने हम देखिबा viewed in internet browser
Okay, it is of two type. One is static, another is dynamic. The heading the static web page. Static web page are delivered to the user नेट स्लो होची अच्छा सुनो मते कॉल करो कॉन्फ्रेंस कॉल रे मु नै होची स्क्रीन जदी तुमको शो करछे ठीक है मु कॉन्फ्रेंस कॉल रे नै होची जार नेट स्लो होची मु कॉन्फ्रेंस कॉल रे नै होची मते हां आयस तमे भी फोन करो सतेज देव सुबुची तो आरो नंबर 700 नंबर रे फोन करो 7008595002 7008595002 हां ए सुबुची तो स्क्रीन देखा होची न देखा गले वीडियो कॉल कर दो पूरा क्लियर दिखा दियो माने ई कॉल टा को कन्वर्ट कर दो ठीक है देखो वेब पेजेस टा होची हमर दी प्रकार रो गोटे होची स्टैटिक वेब पेज अनदर इज डायनामिक वेब पेजेस तो स्टैटिक वेब पेजेस टा मु हेडिंग रे डाकतले लिखो स्टैटिक वेब पेजेस आर डिलीवर्ड टू द यूजर static web pages are delivered to the user exactly as these are stored next is dynamic web pages So static टा क्या होता है actually? static web pages are delivered to the user as these are exactly stored
जेमति कि हमें कोनोसी वेबसाइट ओपन करिवा तार अछि कांटेक्ट अस अबाउट अस पेज ए पेज केबे हमरो चेंजेस हबनी कांटेक्ट अस अबाउट अस केबे चेंज हबनी लॉगिन पेज ता चेंज हबो हमें जो वे रे लॉगिन करिवा जहा आईडी रे करिवा से आईडी पासवर्ड हमको शो करियो ओके नेक्स्ट इज dynamic web page in the case of dynamic web page the content is rendered at the time of request सर रेंडर मीनिंग कोन रेंडरिंग माने हमको शो करिवा रेंडरिंग ओके हमें आईडी पासवर्ड दबा से हमको वैलिडेट करियो वैलिडेट करके हमको जो पेज ता दबा ताको आजीवा रेंडरिंग बुझला ओके यस सर next is what is that means when we are interacting with the internet we're using www so www is what www is a warehouse माने हमारा डेटा रो warehouse सबो इंफॉर्मेशन www अंडर स्टोरेज तो से warehouse रो हमको को इंफॉर्मेशन दरकार सपोज मते फ्लिपकार्ट रो इंफॉर्मेशन दरकार सो आई राइट www.flipkart.com जोटा मते दरकार मु स्पेसिफिक से जिनसटा मु रिट्राइव करी then basically this internet it is used to access to the information communication data transfer e-commerce okay so in this various part we are using internet for accessing the information for communication for data transfer electronic and e-commerce access to information पाई हमें गूगल यूज करूचे कम्युनिकेशन पाई जेमते हमें व्हाट्सएप यूज करूचे ओके देन डेटा ट्रांसफर हमें करि पाउचे आउ फ्लिपकार्ट अमेज़न ए सब हमें यूज करि पाउचे okay so these are the communication medium we are using माने एथि पई हमें यूज करूचे कोन ना इंटरनेट ता यूज करूचे so now for creating a html एबे मु पूरा परफेक्टली html को आछे html लो मेन कंटेंट जोरा रहउची बा मेन टैग जदि हमें कहिबा सेटा हमें कहिबा डॉक टाइप फर्स्ट जो टैग हमें यूज करिबा ता डॉक टाइप यूज करिबा देखो html रे हमें जो लिखिबा एटा लिखिया पे हमें टैग यूज करूचे एटा ला टैग एटा कहिबा हमें स्टार्टिंग टैग and it is called as the ending tag starting tag and ending tag हमरा टैग ता इति स्टार्ट हबो टैग ता एंड हबो आ भीतर ही हमें कंटेंट लिखिबा ओके तो html रो जोटा फर्स्ट टैग हमें यूज करिबा सेटा को आजिबो एटा एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप html टैग गुडा को मन रखियो आ खाली टैग गुडा को मन रखिया अछि टैग मन रख देले हे जो डिजाइनिंग डॉक टाइप html it provide an instruction to the browser about the version of html ए पार्टटा हमर रन हुए नै एटा केवल यूज करा जाय हमें को html वर्जन ता यूज करूचे सेटा जानिबा पई ए टैग ता हम यूज करियो
It is not mandatory part. এটা ন লেখিলে ବି ଚଳିବ। HTML ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇ ଟ୍ୟାଗ ଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ, but it is not mandatory tag, it is a optional tag. Okay, link କଟିଲେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିବ ସେମ୍ ଲିଙ୍କ ରେ। ଟିକେ ଟ୍ୟାଗ ପଢେଇ ଦବା ତାପରେ ରଖିବା। And HTML tags specify the browser that the document is a HTML document. The opening of the HTML document is HTML and ending is /HTML. Doc tab ପରେ the first tag जोटा ଆମେ यूज करिवा सेटा को आजिबो HTML, माने HTML टा हमरा स्टार्ट हुए एई टाइप रे लिखा हबो।